Welcome to Physics Open House. You are listening to Mahavir Singh. Today we cannot go out of our hut. हमको अपनी झोपड़ी में ही रहना है, इसलिए we have no mic, no stand for camera and no blackboard, but we have contents that we want to discuss with you. So today we will discuss expansion of solids. Here carom board is acting as the blackboard and the written material on the board that will be discussed with you. Expansion in solids. On heating, solids increases or expands in length or area or in volume. So there are three types of expansion in solids. Number one, linear expansion. Number two, superficial expansion. Number three, cubical expansion. So we will discuss one by one. Linear expansion means increase in length. If L1 and L2 are two lengths at temperature T1 and T2, then increase in length L2 minus L1 is directly proportional to original length and rise in temperature. Therefore, L2 minus L1 is equal to alpha L1 T2 minus T1, where alpha is the coefficient of linear expansion. Alpha is equal to L2 minus L1 divided by L1 into T2 minus T1. If you want to define alpha, so let us imagine original length L1 is equal to 1 unit, temperature difference 1 unit, T2 minus T1 1 unit, therefore alpha is equal to L2 minus L1. So definition of alpha is the coefficient of linear expansion is equal to increase in length per unit, rise in temperature per unit original length. In the similar way, you can define beta. Beta is the coefficient of superficial expansion. Beta in the same way if you replace L by S. So S2 minus S1 directly proportional to S1 into T2 minus T1. Therefore S2 minus S1 is equal to beta S1 into T2 minus T1. Therefore beta is equal to S2 minus S1 upon S1 T2 minus T1, where S1 is the original area at temperature T1, S2 is the area at temperature T2, and beta is the coefficient of superficial expansion. Therefore beta is equal to S2 minus S1 upon S1 into T2 minus T1. For the definition of beta, again, if S1 is equal to 1 unit and T1 minus T2 is equal to 1 unit, then beta is equal to S2 minus S1 means increase in area. So the coefficient of superficial expansion is defined as equal to the increase in area per unit original area per unit rise in temperature. Similar way, you can define coefficient of cubical expansion. Replace all the symbols L replaced by V volume. So similar way में you can write increase in volume V2 minus V1 is directly proportional to original volume V1 into rise in temperature T2 minus T1. Therefore V2 minus V1 is equal to gamma V1 within bracket T2 minus T1. Therefore gamma is coefficient of cubical expansion. Gamma is equal to V2 minus V1 upon V1 T2 minus T1. In the similar way, if you want to define
gamma means the coefficient of cubical expansion. So if B1 is equal to 1 unit, T2 minus T1 is equal to 1 unit, therefore gamma is equal to increase in volume. So the definition is the coefficient of cubical expansion is equal to the increase in volume per unit original volume per unit rise in temperature. So we have done alpha, beta, gamma, their relation, beta double of alpha and gamma triple of alpha, or you can write alpha is equal to beta ka half, gamma ka 1/3, or you can write 6 alpha is equal to 3 beta is equal to 2 alpha. 2 gamma, sorry. If you are given alpha and the question is requiring for gamma, so you multiply by 3. If in the question you are using beta but you are given alpha, then multiply by 2. So this is the relation between alpha, beta, gamma. We will do 3 questions here. Number 1 question, you will see there is a bimetallic strip. One part is made of copper, another part of iron. Both are identical in length and thickness. When it is heated, if coefficient of linear expansion for copper is greater than coefficient of linear expansion for iron, so what will happen? Because coefficient of linear expansion for copper is more than coefficient of linear expansion for iron, so increase in length for copper will be more than increase in length for iron. So you see in the figure, first figure, both are identical, have same length and same dimension. Second figure, after heating, copper increases in length, expand more as compared to iron. So this bimetallic strip will be bending. स्टेप बैंड हो जाती है, टॉप पर कॉपर रहेगा और बॉटम पर आयरन रहेगा. These are the questions which has been asked in the competition examination previously. Why question number part other of clock's pendulum? T is equal to 2 pi under root L upon G, where T directly proportional to under root length. Clock pendulum are made of in bimetallic ही बनाई जाती हैं. इनके ऊपर ये पूछ सकते हैं कि समर के अंदर क्या होता है. इन समर एक्सपेंशन के कारण ड्यू टू हीट एल विल इंक्रीज, लेंथ बढ़ेगी तो टाइम पीरियड बढ़ेगा, टाइम पीरियड बढ़ेगा तो लेट होगी, तो क्लॉक समर में डिले हो जाती हैं. और विंटर सीजन में लेंथ कॉन्ट्रैक्ट होगी, लेंथ बिकॉज टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल अंडर रूट एल डिक्रीज हो गई तो लेंथ, तो टाइम पीरियड भी डिक्रीज हो गया. टाइम पीरियड कम होने का मतलब फास्ट हो जाएगी. इन विंटर क्लॉक्स रन्स फास्ट, इन समर क्लॉक रन्स लेट. क्वेश्चन नंबर 2 में देखेंगे इफ द डिफरेंस बिटवीन द लेंथ ऑफ द ब्रास रॉड है और दूसरी स्टील रॉड है, अगर इनका डिफरेंस कांस्टेंट है एट ऑल टेम्परेचर, तो आपको ये बताना है इज इट पॉसिबल, कब पॉसिबल होगा. तो हमने लिखा है बिकॉज डेल्टा L1 इंक्रीज इन लेंथ इज इक्वल टू L1 कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन अल्फा 1 राइज इन टेम्परेचर डेल्टा T. सिमिलरली फॉर अदर रॉड डेल्टा L2 इज इक्वल टू L2 into coefficient of linear expansion alpha 2 into delta T. because delta L1 is equal to delta L2, दोनों को बराबर कर दिया तो इनवर्स रेशो आ गया. if the length and coefficient of linear expansion इनवर्स है एक दूसरे के, लेंथ बढ़ेगी, कोफिशिएंट डिक्रीज होगा, उल्टा इनवर्स माने उल्टा, एक बढ़ेगा दूसरा घटेगा, तो ये पॉसिबल होता है. क्वेश्चन नंबर 3, टॉप ऑफ द लेक. अभी हमने बताया कि जितने सॉलिड लिक्विड गैसेस होते हैं ये सारे एक्सपेंशन का केस होता है, एक्सपेंड करते हैं. लेकिन इन केस ऑफ वाटर
अप टू 4 डिग्री से उल्टा होता है, वाटर अप टू 4 डिग्री से कॉन्ट्रैक्ट करता है। इसका मतलब एट 4 डिग्री से वाटर का वॉल्यूम सबसे मिनिमम होता है, इसलिए डेंसिटी सबसे ज़्यादा होती है। इसलिए जब भी हम डेंसिटी को डिफाइन करते हैं तो वाटर नीचे जो लिखते हैं हम वाटर एट 4 डिग्री सी, इसीलिए लिखा जाता है एट 4 डिग्री सी वॉल्यूम मिनिमम डेंसिटी मैक्सिमम, और इसको भी 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब या 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब माना गया है। उसी के ऊपर यह क्वेश्चन है कि टॉप ऑफ द लेक इज फ्रोजन, एयर इन कॉन्टैक्ट इज एट -15 डिग्री सी, व्हाट विल बी द मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ वाटर। पार्ट 1 के अंदर है इन कॉन्टैक्ट ऑफ लोअर सरफेस ऑफ आइस। एक्वेंटिक लाइफ जो भी होते हैं वो अंदर सर्वाइव करते हैं, क्योंकि नीचे पहला पार्ट है इन कॉन्टैक्ट ऑफ द लोअर सरफेस ऑफ आइस, वो 0 डिग्री टेम्परेचर पर रहता है। एट द बॉटम ऑफ द लेक 4 डिग्री सी बना रहता है, इसलिए अंदर जो है जितने भी एक्वेंटिक लाइफ है, फिशेज वगैरह है, वो सर्वाइव करती हैं। ऊपर 0 डिग्री होगा तो नीचे 4 डिग्री सी होता है। इन मेटल हीटेड द मास रेशो, ये दे रखा है कि अगर किस चीज़ में चेंज होगा। इफ़ ए मेटल बॉल, कोई भी बॉल है, बॉल का सरफेस एरिया 4πr², वॉल्यूम 4/3πr³, और मास m मान लीजिए। अगर इनको हीटअप किया जाता है तो ये कहते हैं रेडियस r मान लीजिए, किस में चेंज होगा, विच विल इंक्रीज मैक्सिमम, तो r तो सबसे कम, r विल बी डिक्रीजिंग लिस्ट, और वॉल्यूम में 3 बार आता है वॉल्यूम, तो वॉल्यूम विल बी मोस्ट। वॉल्यूम एंड रेडियस दो पर फर्क पड़ेगा, नो चेंज इन मास एंड नो इन सरफेस एरिया। This is for today. Next we will do in the next degrees of freedom, and please stay at home, obey the government of India, don't go out, घर पर ही रहिए, घर पर ही पढ़िए। आपके पास बहुत टाइम है, एग्ज़ाम भी पोस्टपोन हो रखे हैं, डेट भी आपको अनाउंस हो जाएगी। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स।